So we are doing Laplace transformation, so we'll be continuing with that. So see what we have done till now in Laplace transformation. So we know the definition. This is the definition of Laplace transformation. Till now we have not discussed for what values of ft this integral will exist, right? So this integral may not exist for all ft's. So we will discuss later on what are the conditions on ft, what are the conditions on ft so that L of ft exists. We are to discuss that later on, right? And after that, we had a list of formulas. Okay. And then we had some properties. So what was the first property which we had done? The first was this was called first shifting property, which was L of f of t is f of s. Then if I multiply left hand side with e raised to power at, then it will be f of s minus a. And then we had seen that if L of f of t is f of s, then L of t f of t was minus dy by ds of f of s, and then so on. L of t square f t was minus 1 square d2 by ds2 f of s, and then L of tq was third derivative with minus 1 raised to power 3, and so on, right? These are the properties which we had done in the last class. So today we'll be continuing with these properties only. So let us start. This is all recap. So the next property is, if you have L of f of t is your f of s, and you divide with t instead of multiplying, if you divide with t, then on the right hand side you will integrate with respect to s from s to infinity. From s to infinity. Okay. So we will not prove this. Just you remember this property, right? So you see, if you have, you can do problems based on this. For example, find Laplace transform of 1 minus cos of 2x by x. Okay, so how we will do this? We will say Laplace transform of 1 minus cos of 2x. What is this? And there is one more property we have done, linearity. That is the most important property. Okay, so linearity we have also done. So we will start with am I audible, students? Yes? Yes, ma'am. Okay, beta. So if you have any doubts, you can ask me. So by linearity property, so this is L of 1 minus L of cos of 2x. What is L of 1? 1 by s. What is L of cos of 2x? 1 by 2. S square plus 2 square. Okay. So this is 1 by s minus s upon s square plus 4. We can further simplify it, s square plus 4 minus s square on s into s square plus 4. Right? Actually, we should not, because we have to integrate, right? Now, by the property, if you divide with x, you have to integrate on right hand side from s to infinity. Is that thing clear, beta? If you divide with s x here, you have to integrate with respect to s on the right hand side. And I told you the variable here can be t or x. That is okay. Now, what is the integration here? This is log of s minus log of 1 by 2. I multiply and divide with 2. Log of s square plus 4. Limits of integration. I'll put s to b. Limit b going to infinity. I told you already, but we will always do whenever we have to put limit infinity. So this is, what is this? This is log of s upon square root of s square plus 4. Okay, s to b, limit b going to infinity. So what is this? This is log of b upon square root of b square plus 4 minus log of s upon square root of s square plus 4, limit b going to infinity.
what is this? Can you tell me what is this limit? What is this limit? 1. लिमिट नो नॉट 1 बेटा, अंदर देखिए ना, मैं b से डिवाइड कर रही हूँ, 1 + 4 by b square. So this is 1, log of 1 is 0. Is that thing clear? मैंने b Yes, square ma'am. डिवाइड कर दिया, b is going to infinity, so 1/1 + 0, log 1 is 0, right? And minus, sign I am consuming, I'll just reverse this, square root of s square plus 4 upon s, right? So therefore, your Laplace transformation of 1 minus cos of 2x upon x is log of s square plus 4 by s. Is that okay? Clear है बेटा सबको? मैम एक बार फिर से बता दो. कहाँ से नहीं समझ में आया बेटा? देखो हमने ये निकालना है ना, मैंने पहले L of 1 minus cos of 2x निकाला, 1 minus cos of 2x. लिनियरिटी प्रॉपर्टी से मैंने अलग अलग कर दिया, L of 1 minus L of cos of 2x. यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लिया. This is what we get. Now the above property says if you divide with t or x, on the right hand side you will integrate. So here I am dividing with x, so on the right hand side I am integrating with respect to s from s to infinity, right? So this is, I just integrated and then I put the limits. Okay, s to b, limit b going to infinity. This is how we put the infinity limit. Now this limit is, you have to compute this limit. Here I am dividing with b in denominator and numerator. I'll get 1 upon square root of 1 plus 4 by b square. As b goes to infinity, this goes to 0. So this is log of 1. Log of 1 is 0. So this is your answer. Okay, beta. So let us do one more problem. Question is, find L of sin x upon x and hence show that 0 to infinity sin x upon x dx is equal to pi by 2. Fine. So let us first find out L of sin of x upon x. L of sin x upon x. What is this? So we'll start with L of sin x. What is L of sin x? This is 1 upon s square plus 1. Okay, everybody knows this. This is just a formula. Now if I divide with x, I have to integrate on right hand side with respect to s. Limits from s to infinity. So what is this integral? Tan inverse of Tan inverse of s. s to infinity. So what is this? Tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse of s. Is that thing clear? So what we Yes, get, ma'am. that L of sin x by x is equal to pi by 2 minus tan inverse of s. This is what we get. Now, next question is that you have to find out this integral. Okay. So here you see what you can do. You just write the definition. What is this? By definition of Laplace transformation, L of sin of x upon x is 0 to infinity e raised to minus sx sin x upon x dx. Is that okay? This is by definition. And you are saying this is equal to pi by 2 minus tan inverse of s. I want to compute this integral. So what should I put? What should I put? Put s is equal to 0. So what you'll get? 0 to infinity sin x by x dx is equal to pi by 2 minus tan inverse of s is 0. So this is your answer. Okay. Is that thing clear? So now you see, you can use, otherwise integrating this is very difficult because you cannot integrate it by parts, sin x upon x, because none of the functions sin x and 1 by x, they are dying. Okay, so it is otherwise difficult to compute integral, but with the aid of Laplace transformation you just computed this integral. So you see, this was not our aim that we will use Laplace transformation to find out the integrals, but somehow you see there is a way to find out these improper integral values using Laplace transformation. Is this in clear, beta? Clear है ये सबको? Anybody having doubt? Okay, so let us do one more problem. Some problems we'll do. So you have find L of e raised to minus 2x sin 3x upon x. Okay, can we do it quickly? Everybody? समझ आ रहा है बेटा?
Please reply. Yes, ma'am. Okay. So you see, ये कैसे करोगे आप? Tell me. So first of all, you know what is L of sine 3x? That will be 3 upon s square plus 9. Now your choice. You want to put x first or e raised to minus 2x. I'll put x first. So sine 3x by x. If I divide with x, I have to integrate with respect to s. S square plus 9 ds. So this is, what is this? This is 3 upon 3 tan inverse of s by 3. Fine. S to infinity. So what is this? This is pi by 2 minus tan inverse of s by 3. Is that thing clear, beta? Sine 3x by x. Now we have to multiply with e raised to minus 2x. So if you multiply on the left hand side with e raised to minus 2x, so आपकी first shifting लगेगी. First shifting क्या कहती है? Replace s S with by s plus 2. So your answer will be pi by 2 minus tan inverse of s plus 2 by 3. So this is the Laplace transformation for your function. Clear? Okay, let us do one more problem. So you have this, show that this integral मैम 0, yes, beta? मैं आपने ये किसी ये लास्ट बता दे रहे फिर से पर minus 2x से जब multiply करते हो फर्स्ट शिफ्टिंग लगती है. If you multiply with e raised to power x, then you replace s with s plus a. लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टी की थी. तो यहाँ पे a क्या है? -2. So you replace s with s minus a, sorry. So s minus -2. So s plus 2 से replace कर दिया आपने. So this is called first property. Okay, बेटा? Clear? यस मैम यस मैम Okay, so the next one is show that this integral x e raised to power minus 2x cos of x dx is equal to 3 by 25. So can you tell me how you will do it? Just find out the Laplace transformation of x cos of x. पहले बताइए cos x का क्या होता है? S upon s square plus 1. Am I audible? Actually, internet shares. Okay. Now, what will be if I multiply with x? So I'll do the derivative on the right hand side. So what is this? This is equal to derivative कीजिए बेटा. This is s square plus 1 का square. S square plus 1 into derivative of s is 1 minus s into derivative of s square plus 1 is 2s. So this is minus s square plus 1 minus 2s square upon s square plus 1 ka square. So this is s square minus 1 upon s square plus 1 ka whole square. Is this thing clear? Okay, beta. Now you just put the definition here. So that is 0 to infinity e raised to minus sx x cos of x dx is equal to s square minus 1 upon s square plus 1 ka whole square. Now we want to be e raised to minus 2x. Put s is equal to 2. So you'll get 0 to infinity e raised to minus 2x x cos x dx is 2 square minus 1 upon 2 square plus 1 ka square. So this is 3 upon 25. Hence proved. यही प्रूव करना था ना बेटा? किसी को डाउट इसमें? Is this clear? Let us move on to the next property. So we have the next property. If you have done any doubts, please ask beta. Chehak, are you there beta? समझ आ रहा है चहक? Ma'am, yes, ma'am. Okay. So next property is कि अगर आपके पास अभी तक हमने क्या किया है? You see, if you multiply with with t on the left hand side, then you have to differentiate right hand side, right, with the negative sign. And if you divide left hand side with t, then you have to integrate the right hand side with respect to s. This is what we have done. Okay. So now what we will see, what will happen if we differentiate on the left hand side?
or we integrate on the left hand side. So the next property is that if you have L of f of t is equal to f of s, if L of f of t is f of s, then if I differentiate the left hand side, L of f dash t is equal to s f of s minus f of 0. Okay, and L, if I differentiate twice, it will be s square f of s minus s f of 0 minus f dash 0. You have to remember all these formulas. And then L of f of triple derivative with respect to t will be s cube f of s minus s square f of 0 minus s f dash 0 minus f double dash 0, and so on. Okay, clear beta? Formula is clear? Problems karenge to you will understand more. Question is, find the Laplace transformation. Find Laplace transformation of f of x is equal to sine square x using the Laplace transform of derivatives. इसको बोलते हैं, this property is called Laplace transform of derivatives. Transform of derivatives. Using Laplace transform of derivatives. So let us see how we can use Laplace transform of derivatives to find out this L of sine square x. So we have here f of x is sine square x. So I'll just do f dash x. What is that? That is 2 sine x cos x. What is that? That is sine 2x. So L of f dash x will be L of sine 2x. I know to find how what is L of sine 2x, which is 2 upon s square plus 4. Now by definition, by this property, what is this? By this property, this is s L of f of x minus f of 0. Clear beta? So this was s f of s. F of s is L of f of t minus f of 0 is equal to 2 upon s square plus 4. f क्या है आपका? Sin square x. So f of 0 will be 0. So s L of f of s is equal to 2 upon s square plus 4. So you get L of f of s is equal to 2 upon s square plus 4. Clear beta? किसी को doubt? Anybody having doubt till here? मैम एक बार फिर से समझा दो यार। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? L of sin square x का आपने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. एक तरीका तो आपको ऑलरेडी आता है. क्या है एक तरीका? Can anybody tell me? You just write it as 1 minus cos of 2x by 2, then use linearity, है ना? अब बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने डेरिवेटिव्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, मतलब आपने ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी है. क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो मैंने क्या किया, f of x is sin square x, मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So what we will get, this derivative is 2 sin x cos x. This is sin 2x. Okay, so I got f dash x is sin 2x. अब sin 2x का Laplace ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है 2 upon s square plus 4. ओके, अब मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. ये प्रॉपर्टी है कि this L of f dash x is s into L of f of x minus f of 0. This is the property beta. You see? Can you see? क्लियर है कैसे लगानी है? हाँ जी मैम. तो अब हमने यहाँ से f of 0 क्या है हमारा, क्योंकि f of x sin square x है, 0 पुट कीजिए, f of 0 0 है, तो यहाँ से L of f of s की वैल्यू निकाल दीजिए बस. क्लियर? यस मैम. Okay. So, okay, do one more problem so you should understand. Find L of f dash x where f of x is equal to e raised power 2x sin x upon x. कैसे करोगे बेटा? इस एक तो तरीका यही है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो फिर उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालो. दैट इज डिफिकल्ट ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन
इसमें आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ेगा, राइट? हो जाएगा ऑब्वियसली। तो दूसरा तरीका क्या है, विल जस्ट फाइंड आउट इट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। एल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं पहले, क्या है उसके लिए। आप कैसे, अभी निकाला था ना हमने ये, है ना? कैसे निकालोगे बेटा बताओ, चलो कर लेते हैं दोबारा। एल ऑफ साइन एक्स निकालोगे सबसे पहले, वो क्या है 1/x² + 1। फिर आप x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करोगे। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ s to infinity. So this is pi/2 minus tan inverse of s. अब e⁻²x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट शिफ्टिंग कहती है रिप्लेस s with s-2, रिप्लेस s with s-2। so ये हो गया आपका। now this is your f of x, I want L of f dash x। so L of f dash x is what, बताइए? this is s L of f of x minus f of 0। अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो टेक लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू, अगर f of 0 डिफाइन नहीं है, राइट? सो हियर s into f of, ये क्या है, ये अभी आपने निकाला pi/2 minus tan इनवर्स ऑफ s-2 माइनस व्हाट इज f of 0, इसमें 0 पुट करोगे। सो दिस इज 1 एंड दिस इज लिमिटिंग केस 1, सो दैट इज 1। इज दैट ओके बेटा? f of 0 अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यू विल टेक द लिमिट x going to 0 f of x। So this is your answer. Is that thing clear? Please tell me, beta. Anybody having doubt till here? चले आगे? Okay, so I'm writing the last property, which is called Laplace transform of integrals. Laplace मैम एक बार आप transform. ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? Yes, मैं बस थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। हाँ जी, कर लीजिए। Let me. हो गया मैम, थैंक यू। Okay, chicken. Last property is Laplace transform of integrals. So what is that? That is if L of f of t is f of s, and if you integrate this with respect to t from 0 to t, then right hand side you will divide with s. Okay? If you integrate it twice, 0 to t, ft dt dt, then on the right hand side you will divide with s square and so on. Okay? So this property you have to remember. If we will get time in the end, we will prove these properties also. Okay, not the proof now. So for example, find L of 0 to t e raised power t sin t by t dt. So कैसे करोगे इसको? You will say this is here, this is f of t is e raised power t sin t by t. So L of 0 to t e raised power, this is your ft dt by the above property will be f of s by s, where what is f of s? f of s is Laplace transformation of e raised power t sin t by t. ये तो आपको याद हो गया होगा। अब क्या है, 3-4 बार निकाल लिया ना? Anybody? This is pi/2 minus tan inverse s minus 1. ओके बेटा, क्लियर है ना? निकाल लेना अगर नहीं याद है तो। आपका आंसर क्या आएगा फाइनली? L of 0 to t e raised power t sin t by t dt will be equal to pi/2 minus tan inverse of s minus 1 upon s. Clear बेटा? Is that okay? Do one more problem.
So find L of 0 to t e raised to minus 4t sin 3t dt. बताइए बेटा आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. एनीबडी? सिंपल बेटा इसका निकाल लीजिए पहले. L of t e raised to minus 4t sin 3t. इसका कैसे निकलेगा? पहले L of sin 3t लीजिए. So that is 3 upon s square plus 9. अब देखिए आपकी मर्जी है, चाहे ये लगा लो पहले चाहे ये, बट ये लगाना बेटर है क्योंकि t लगाने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसके साथ +4 आ जाएगा. तो ऑल्दो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी गलती हो सकती है. सो t sin 3t विल बी minus dy by ds of 3 upon s square plus 9 which is 3 upon s square plus 9 का स्क्वायर into 2s that is 6s. ठीक है. अब आप e raised to minus 4t लगा लीजिए. अगर e raised to minus 4t लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे s will be replaced by s plus 4. Is that thing clear beta? Now when you integrate it with on the left hand side from 0 to t, on the right hand side you will divide with the s. Okay, so it is 6s plus 4 upon s square, s plus 4 square plus 9 का whole square. So this is your answer. Is that thing clear beta? किसी को डाउट यहाँ तक? Any doubt बेटा? Because I am going to start the next thing. अगर नहीं है doubt, तो आपको बस ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या क्या है? डेफिनेशन यू शुड नो. लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की मैम डेफिनेशन. जो आपने बिल्कुल लास्ट में किया वो समझा दो एक बार. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? हाँ जी मैम, ये क्लियर है मैम. अब देखिए ना ये प्रॉपर्टी क्या कहती है. अगर यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया है 0 to t तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एफ टी का वो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन था उसको एस से डिवाइड करोगे, है ना? अच्छा हाँ जी मैम. अब यहाँ पे मैंने इसका निकाल लिया. अब यस मैंने मैम. 0 to t इंटीग्रेट किया है तो तो जो वहाँ भी पे वो डिवाइड बाय एस होता है. ठीक है. सो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपको अभी तक आना चाहिए, although I know there are so many things जो आपको लग रही होंगी इरिटेटिंग क्योंकि मैंने प्रूफ्स नहीं कराए हैं, ठीक है, बट स्टिल जो अभी तक आपको सीखना चाहिए वो ये है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूलाज की जो लिस्ट है दैट यू शुड नो, डेरिवेशन, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, एंड प्रॉपर्टीज. Okay, and there is one more thing left in Laplace transformation, that is I already told you conditions on ft such that L of f of t exists. Still I am keeping it on hold. Later on I'll discuss this thing. So I am going to start the next thing, that is inverse Laplace transformation. Okay, so maybe there are some questions in your tutorial sheet 4. You should be doing now tutorial sheet 4. Up to tutorial sheet 3 you should already you should have completed that tutorial sheet. So if not, please do that. Okay beta? So I'll also send you the problems for what we are doing now. Okay, so next thing is inverse Laplace transformation. Inverse Laplace transformation. So what is that? Inverse Laplace transformation is, you see I told you that simple hai, it's nothing difficult. If L of f of t is f of s, then we say L inverse of f of s is f of t. ठीक है, मतलब इनवर्स का जो आंसर आएगा वो एफ टी आएगा.
क्लियर है? नाउ उसमें क्या था, एल में इनपुट वाज एफ टी एंड आउटपुट वाज एफ ऑफ एस. एल इनवर्स में योर इनपुट विल बी एफ ऑफ एस एंड आउटपुट विल बी एफ ऑफ टी. फॉर्मूले सारे उल्टे हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस मेक योर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज अगेन. सो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज फॉर इनवर्स. सो मैं आपका वही लिखती जाऊंगी फॉरवर्ड के फॉर्मूलाज, फिर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी विल मेक द फॉर्मूला फॉर इनवर्स. सबसे पहले किया था हमने एल ऑफ 1 इज 1 by s. So what will be L inverse of 1 by s? This is 1. So this is your first formula. Second is, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ so that आपको easy हो समझना. Second is L of t किया था हमने 1 by s square. Okay? So आपके पास क्या हो जाएगा, L inverse of 1 by s square will be t. हमने जनरल किया था L of t raised to power n is क्या था बेटा, n factorial upon s raised to power n plus 1. Okay? जब n is integer, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताइए. s raised to power n plus 1 is t raised to power n upon n factorial. क्लियर बेटा? इज दिस थिंग क्लियर? उल्टा कर रही हूँ बस, मैं इनवर्स ले रही हूँ n factorial क्योंकि कांस्टेंट है उसको उस साइड लिख दिया क्योंकि दिस इज द मोस्ट, दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. L of t raised to power n, जनरल फॉर्मूला क्या किया था, अगर n कुछ भी है ये गामा ऑफ n plus 1 नॉट हाफ n plus 1 डिवाइडेड बाय s raised to power n plus 1. ओके, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, L इनवर्स ऑफ 1 upon s raised to power n plus 1 is t raised to power n upon gamma of n plus 1. ओके, हाँ ऐसा लिखा होगा. So that is t raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial. Clear? इसको लिखते हैं L inverse of 1 upon s raised to power n is t raised to power n minus 1 upon gamma of n. Clear है? n plus 1 की जगह पे n लिख दिया, correspondingly right hand side change हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सारे. 1 2 3 4. Okay, next one is L of e raised to power at was 1 upon s minus a. So उसके corresponding n inverse का फॉर्मूला क्या बनेगा, L inverse of 1 upon s minus a is e raised to power at. And then you have L of sin at, that was, what was that, a upon s square plus a square. तो इसके corresponding फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं, L inverse of 1 upon s square plus a square is equal to sin at by a. ये वाला a जो है वो उधर ले जाते हैं, यहाँ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला a चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, it's your choice. L of cos at, this is s upon s square plus a square. This says L inverse of s upon s square plus a square is equal to cos at. अब ये वाला s वहां नहीं लेके जा सकते है ना, क्योंकि ऑब्वियसली s में तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो a कांस्टेंट था इसलिए ले गए, इसको ऐसे लिखोगे. And then you had this formula L of sin hyperbolic at. What was the formula? This was a upon s square minus a square. So corresponding L inverse formula will be 1 upon s square minus a square is sin hyperbolic at upon a. And then you have this L of cos hyperbolic at. This is s upon s square minus a square. So the corresponding formula becomes s square minus a square is cos hyperbolic at. बताओ बेटा, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में कोई दिक्कत, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिंपल. इज दिस थिंग क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट है बेटा बताइए, कुछ नया नहीं है, बस जो आपकी लैपलेस वाली लिस्ट थी मैंने सब पे इनवर्स लगा दिया, दैट्स इट. चले आगे. Okay, so the next property is L inverse is linear to.
as L. L inverse is linear. इसका क्या मतलब है कि L inverse of some constant into f of s plus beta g of s will be equal to alpha बाहर L inverse f of s plus beta बाहर L inverse of g of s. Can you prove it? इसको कैसे प्रूव करोगे बेटा? Linearity. Anybody? किसी को आइडिया है कैसे प्रूव करेंगे इसको? Okay. Start with right hand side. Right hand side is what? This is alpha L inverse of f of s plus beta L inverse of g of s. Right? Or what you can do is you can write like this. Okay, ठीक है. So what is this? This is your f of t. And what is this? This is your g of t. Right? And just a minute. मुझे ये प्रूव करनी है linearity property. So what I will do is I'll assume that just a minute. Yeah, ठीक है. Is that thing clear, beta? So right hand side is this. So L inverse of alpha f of s plus beta g of s. I want to prove this is equal to alpha f of t plus beta g of t. This is true if and only if I will bring L on the other side. Alpha f of s plus beta g of s is equal to L of alpha f of t plus beta g of t. Now because L is linear, L linear है ना, तो I can bring this like this, f of t plus beta g of t, L of g of t. So what is this? This is f of s plus beta g of s. So this is true if and only if this is true. Is this true? The last statement? Is this true? Yes. दोनों equal तो है, right? Therefore linearity. L inverse is linear. Linear मतलब आप कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, प्लस वाले अलग अलग कर सकते हो. क्लियर है बेटा ये चीज? किसी को डाउट इसमें? बताइए. Am I audible? कृति जैन बेटा समझ आ रहा है? So let us do one problem, a question, then we'll stop. L inverse of 2s upon plus 5 upon s square plus 25. Anybody? कैसे करेंगे बेटा? कोई बता सकता है मुझे? लावण्या, लीजा, बेटा क्लास लगा रहे हो कि भाग गए इधर उधर? कोई नहीं क्लास लगा रहा? मैम लगा रहे हैं. हाँ, फिर बताओ कैसे करोगे? मैम कोई आइडिया नहीं है. क्यों बेटा? अभी तो मैंने हम इसको स्प्लिट अलग कर लेंगे हाँ, s upon s square plus 25 so you write it as 2s upon s square plus 25 plus और 5 5 upon square plus 25. Now क्योंकि लीनियर है तो आप अलग अलग कर सकते हो. L inverse 2s upon s square plus 25 plus L inverse 5 upon s square plus 25. अब इसमें से भी कांस्टेंट बाहर एक निकाल साइन का एक कॉस का हो जाएगा. हाँ, so 2L inverse s upon s square plus 25. मतलब आपने तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आपको फॉर्मूला ना दिखने लग जाए लिस्ट वाला. So what is this? What is this? And Two this cos is, yeah. So this is cos 5 है ना? 2 cos 5 है. हाँ. So 2 cos of 5t plus what is this? Sin of 5t. Is that okay बेटा? तो पहले हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे, अब इनवर्स निकालेंगे. We'll see that computing inverse is little difficult as compared to transformation. तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पहले ही पता होना चाहिए. Clear? So let us do this one more problem. अभी है हमारे पास last. L inverse of 3 upon p square plus 2p. बताइए बेटा. Anybody? मैम इसमें ना p कॉमन ले जाए. So this is L inverse 3 upon p. P मैम वो plus 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1 हम बाय इसको 2 अलग अलग कर लेंगे फिर. क्या वो बेटा? upon p स्प्लिट भी कर सकते हैं मैम. minus Partial split कर fractions देंगे. ना 1 plus p 1 upon p plus 2. एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 by 2 हो गया ना? पार्शियल हाँ जी फ्रैक्शन मैम हो बन गया मैम ये सब. ठीक है.
3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आपका L इनवर्स ऑफ 1/P, P यूज कर रही हूँ मैं, S यूज कर लो, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के मतलब कुछ भी यूज होता है, P + 2। सो व्हाट इज दिस? L इनवर्स ऑफ 1/S और 1/P, व्हाट वाज दिस? 1 हाँ जी, 1 था ना 1 ये? 1 हाँ। What is this? Anybody? This is S, E 1 upon S plus A. E is E2 power minus. e raised to power minus 2. -2 So you see, समझ में आ गया ना बेटा? इसका करने का और भी तरीका है कोई? मैम मेरे ख्याल से वो जो 3 हम पहले ऊपर ले आए हैं बाहर। नहीं, P हम इसके square स्क्वायर को है ना? कंप्लीट कर Plus सकते हैं. 1 minus, yes, square root complete, yes बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 upon what is this? P plus 1 का स्क्वायर, इसको एक बार -1, इसका कैसे करोगे बेटा? वैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग कराई नहीं, बट वही है कि फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओगे पहले, मतलब इनवर्स में नहीं कराई, बट सेम ही बात है। अगर P + 1 है मतलब e raised to -t से मल्टीप्लाइड है, फिर बाद में L इनवर्स ऑफ 3 upon P स्क्वायर + 1, ठीक है। अब ये किसका है? 3 तो बाहर आ जाएगा, ये L इनवर्स ऑफ 1 upon P स्क्वायर + 1 -1, सॉरी, ये साइन हाइपरबोलिक है ना बेटा। सो दिस इज 3 -t साइन हाइपरबोलिक t। ये अब अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? उसमें ये आंसर आ रहा है, उसमें ये आंसर आ रहा है, ये सेम ही है ना। इसकी डेफिनेशन अगर लिखोगे 3 e - t साइन हाइपरबोलिक क्या होता है? e - t माइनस e - t अपॉन 2, सेम आंसर है ना। बट अभी फर्स्ट शिफ्टिंग में कराऊंगी बाद में आपको ना, अच्छे से, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। क्लियर बेटा? तो टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, ठीक है बेटा। इसके ही क्वेश्चंस कराऊंगी मैं और प्रॉपर्टीज कराऊंगी। सो ट्यूटोरियल 4 करना सब लोग शुरू कर दीजिए बेटा। मैम एक ना ऊपर थोड़ा नोट करना रह गया था। कहाँ पे? मैम वो L ऑफ R-6 जहाँ पे आपने लिखवाया था। L ऑफ R-6 मैम। R डैश की F डैश? F-6 मैम एक मिनट मैम वो नीचे करिएगा मैम थोड़ा सा, बस इसी लाइन में मैम। हाँ जी मैम, ये वाला मैम। Any other doubt beta? Then I'll end this class. Tomorrow we'll continue from here. हो गया नोट बेटा? यस मैम, हो गया मैम। Ma'am, can you scroll down a little? यहाँ बेटा श्योर। कहाँ पे? नीचे बिल्कुल। Ma'am, to prove L inverse is linear. ओके, ये रहा बेटा। Yeah, thank Visible? you. Yes, ma'am. ओके बेटा, हो गया नोट बेटा? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो।